Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. We are starting this new session of essay discussion forum now. Previously, before the CSS exam of February 2023, we had stopped it for a few weeks, and after 6 or 7 weeks, we are resuming it. And during this while, many things have changed. Just because of the 1st of February paper of CSS essay, thank God there has been a paper that really asks for the brain rather than just for the memory. और जिस किस्म का पेपर था उससे जो हमारे पूरे पाकिस्तान में जो एक लहर आई, लोगों को इस चीज की समझ आई कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे या ओपन एंडेड एसेज जो हैं वो भी किसी खाते में होती हैं और आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है वो भी मैटर करती है, ना कि सिर्फ एक्सपोजिटरी जिसको हमारे यहाँ गलती से डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजिटरी एसेज जो है वो सिर्फ चलती रहेगी। आज टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है इसके लिए फर्स्ट मैंने सोचा कि क्योंकि इतना ज्यादा मशहूर है बॉयज विल बी बॉयज, लोग बहुत हंसे इसके ऊपर और जितना हंसे उतनी उन्होंने अपनी कम इल्मियत जो थी, लैक ऑफ नॉलेज जो था वो दिखाया। मैंने अपना जब ऐसे का जो पेपर का रिव्यू जो जब दिया था तो उसके अंदर भी यही चीज थी। इट्स अ परफेक्टली फाइन, वेरी गुड एंड वेरी डीप सॉर्ट ऑफ अ टॉपिक फॉर ऐसे, और इसका हंसी मजाक बन जाना अफसोसनाक था कि पाकिस्तानी कौम किसी भी सीरियस चीज को, किसी भी अच्छी चीज को कभी भी मजाक बना सकती है और इसके ऊपर लोगों ने बिला वजह हंसना शुरू कर दिया। मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाया कि बेटा आप लोग जो जैसे ही इसके ऊपर हंसेंगे तो मेरे स्टूडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट ओपन एंडेड टॉपिक है, जिसको नहीं समझ आती वो हंस देता है उसके ऊपर और खूब मजाक उड़ाता है। So we have taken up this topic and just look at it, how deep it is, how good a topic it is. My team of researchers, they have worked very hard on making these outlines, and I don't like to call them outlines anymore क्योंकि वो लोग गलती से इसको आउटलाइन समझ बैठते हैं। ये आउटलाइन नहीं है, ये बेसिकली हमारा आपको रिसर्च इसके ऊपर पेश करने का एक तरीका है, ये डिस्कशन का एक तरीका है। ये एक नया फॉर्मेट है जिसमें लोग अपनी डिस्कशन अपनी आउटलाइन के थ्रू करते हैं, अपनी रिसर्च के थ्रू करते हैं। डिस्कशन भी नहीं है, प्रेजेंटेशन है बेसिकली, और उससे आपको सोचने की नए तरीके मिलते हैं, नई राहें मिलती हैं और आपको समझ आती है कि किस तरह से एक ही टॉपिक के ऊपर कैसे काफी सारी मैनिफेस्टेशंस, काफी सारी इसकी रेमिफिकेशंस जो है एक ही टॉपिक की वो हो सकती है। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रेजेंटर, उसामा साबिर। Usama Sabir, Bismillah. Assalamu alaikum, everyone. As you all know, today's topic is boys will be boys. Before I jump to the discussion, I would like to quote here Theodore Roosevelt, who said that cynicism is an easy way of rejecting what is difficult and what is not understandable by the common people. So this topic was easily mocked by many, but it is a very fine topic which has very great depth in it. So I'll move on to my outline now. Introduction, I have started with the thesis statement that this topic is basically what I think the examiner wanted us to discuss, why the role of man and the behavior of man has been analyzed and judged quite rigorously in the past 5 or 6 decades. And the question of one's can be that why it is so threatening, what is so threatening about a man's behavior, and even that the well-established proverbs like boys will be boys, they are now under debate. And is saying boys will be boys, is it an excuse to the mansplaining or masculinity or toxic masculinity, or is it actually a reality? So in the current paragraph, I have discussed the origin of this tautology. Boys will be boys. Why boys will be boys and not girls will be girls is used. So this tautology originated from a very simple one: the children will be children. It was a gender-neutral tautology in late 1580s. It has a Latin origin, and later on, due to the structure of the social society and hierarchy, to the rough, wild, and tough
and mischievous activities of children, this was evolved into boys will be boys. It was first children will be children, then it was kid will be children, and then now it moved on to boys will be boys. So actually the competitive masculinity is the reason behind this tautology. Now, I've divided different aspects of this tautology, that boys will be boys in psychology and biology. This is my third heading. In the first subparagraph, I am explaining that men usually lie on the extreme ends of the graphs. They are highly successful, they're highly unsuccessful. So this is one of the reasons why boys will always act like boys, right? So first we have to discuss the origin. That origin lies in the psychology and the biology of a man, a boy. So it was a study done, the analysis of SAT scores by Duke University in 2015 and 16s, that men are both dumber and smarter than women. There is no mediocrity in men, right? They will be like hyper successful men, and they will be hyper unsuccessful men, right? They're more smart and they're more dumb as well. So they have this extreme behaviors at both ends, which gives us the idea why boys will be boys. The second one is the psychology of the men, which is more interested in things and results rather than people or emotions. This was a study done by Sachs-Rolls Springer Link research paper in August 2022. It's latest research of 42 countries, which studied the behavior and psychology of a male uh, species. It was find out that the men are more interested into things rather than people or emotions. So that is why the STEM fields are overwhelmingly dominated by male, and the things that include emotions and people dealings like HR and like that, they are dominated by females. So this is one of the aspects why boys will be boys. Then moving on to the next one is the physical nature of this the male body, right? Men are physically stronger, which pushes them to do rough and tough actions. And this can be substantiated by a study done by Princeton University, which wrote a paper in Strength in Genders in 2020. And it find out that absolute total body strength of a woman has been reported as being roughly 67% that of men. That means that it's two-thirds of what a man is capable of. Then is the hormonal cycle, how men operate basically emotionally and how their hormones are ejected into the body. So they have a 24-hour cycle. They don't work on a 28 period, which is why they have more suitability to the daily schedule. And we know the whole daily 9 to 5 jobs, they are more suitable for 24-hour cycle, which is why in the competitive hierarchies they dominate and they lead the hierarchies more often in the given structure. These are the four biological and psychological reasonings why boys will be boys. Now the practical manifestation of a practical of this boys will be boys at individual and family levels. The first one is boys are boys because boys are brought up differently in the society than girls. So if you see that baby boys have high level of testosterone than girls, and which is why they can be easily stressed out and they are harder to calm down. While infant girls are easily to comfort themselves. They have their own emotional intelligence built in them. That is why boys are brought up differently from the society, which is the reason why they behave differently at individual and family levels. The next is the reason boys get some privileges over girls, which are sometimes good for them and sometimes not. So at a family level, if a boy is asking that he wants to go outside and play, and not I'm not talking about the Islamic societies in perspective, but overall across the globe, they enjoy certain privileges. But that doesn't mean that these privileges are actually beneficial for them. They are actually causing them more prone to the risk environment outside as well. So there are positives and negatives to this aspect, but this is why they act like boys. Boys will be boys because they have certain privileges over girls, which is sometimes good for them and sometimes bad. The third one is men are supposed to look after their families and protect them, which is, I think, any one of us at my age, basically, they all will be thinking that now is the age we have started to work rigorously before getting married, and not this is at the back of every man's mind,
That is why boys will be boys, because they're supposed to look after their families and protect them. The society expects from them. There is no other way around for men to behave. So that is why boys will be boys. And boys will be boys on societal levels if we see how in a broader society they act. So boys get more freedom than girls due to their strength and established social values. Now, when in a comparative career choices, the current society structure, the current social structure, it allows more freedom to boys, which is why freedom is in career choices and spouses and dominant in all societies, which is dominated by male. So this is one of the aspects. The next is men mostly lead external social institutions. Now we have to understand what are external institutions. Internal institutions are like obviously psychology of and raising up the children's and like that, and education, the home tutoring as well. But the finance, the groceries, the security, all the external social institutions are led by men. This is why they behave like that, and this is one of the reasons as well. Then the third aspect is on society level, they have more recruitments in armed forces. Well, that's a positive side or negative as well, but there are also more prisoners in male, right? And there are more chances of suicides in male. And it was a study done by International Journal of Environmental Research and Public Health in 2015 that in a males have 1.7 to 2 times more chances to die from suicide. So there are positive aspects of why boys will be boys, but if you see the privileges they have, they're also creating risks for them. Next is the boys will be boys in the political sphere. There are more chances of men being fascists and authoritatives. We have examples of Mussolini and Hitler. Uh, Nobody could expect a female to rise and do an Hitler sign and eradicate the Jews from the land, like and attack every other country that is neighboring, right? But due to their brought up, due to their dominance in the society, or I will not use the word of dominance, but it's kind of the competitiveness they have in the society. They are more prone to being fascist and authoritative. Next is that men can only have the audacity to drop nukes, right? We saw that in Hiroshima and Nagasaki. I think if there would be a girl, right, and somebody has ordered him to press that button, she would have for a moment thought that man, I'm not like generalizing this aspect. It can be vary from male to female, but uh, she would have thought for a second that how many lives we are going to risk at this pressing of this button. So from President Truman to the last man on that plane which was pressing that button, they were all men. There was no female between them. This is one of the things that we can only accept this kind of extreme activities from them, rough activities from them. Then men get overwhelming public support as well. So this the structure of the society they have. If we take an example of Pakistan or any parliament across the world, overwhelming number of male MNAs and MPAs in parliament, they show that they have overwhelming support as well. Then the fourth one is men are more competitive in current political hierarchies. So as I told, that the social hierarchy is also a system, but political hierarchy is also a system as well, because you could expect from a boy or a male to make a choice and stick with it over the period of time, while at certain point of the time the females have to give up on that and have to select their children or family. That's a choice they make. So the hyper successful men in the political hierarchies, they make extreme choices of dedicating their whole lives to that single cause, which is why they are prone to be more competitive in the current political hierarchies. The seventh one is boys will be boys in religious connotations. This subheadings was necessary because since two of the biggest faith describe the roles of men and how boys will be boys can be related to that. The first one is that boys and men roles in Christianity. In their book, I have quoted the verses here that the male's position is over wife, and but it is under Christ. In the religious connotation, they have this a dominance role over there. And then we compare it with Islam, which defines them as the protectors and the caretakers of their families in the Surah and Nisa chapter, right? So if we see from religious connotation, it is also assessed why boys are acting like boys. But why I am giving a conclusion
that I want to mention is that, is it not obvious why boys will be boys? All of these 7 areas of lives that I have described, the psychological, the biological, the social, the political, the religious, I am concluding that which is more threatening? Men showing typical male behavior or forcing men not to act like their instincts? Because we cannot neutralize all the bacteria because some of them is causing mold. If we have problem with certain men and certain boys in certain structure of the society, but we cannot eradicate the whole role of men from the society. So I think that the hidden meaning in this topic, boys will be boys, was that examiner wanted us to interpret it in our own way, and why this phrase is common these days. So I will say, is it not obvious why boys will be boys? Or should we neutralize all men because some of them are creating problem for us? So for me, I think it is not a I mean an excuse, but it's a reality. And some of the boys take advantage, bad advantage of this reality, and some of us take the positives out of. I think most of us take the positive out. Over to you, sir. Thank you very much, Osama Sabir, for a very thoughtful outline. Again, I often say that a good work is that which raises questions, because something which explains everything is probably too simple. Here, many people are asking questions in the chat. I may not be able to address those. First of all, yes, you can address some of the questions if you like. I would like to mention just one thing here, that initially my take on this topic, because many people have been asking me that what is your take on what do you understand by this topic. I will go by the book by Clementine Ford, Boys Will Be Boys, from where this phrase has been taken, and which actually started a feminist discussion and a lot of mud throwing on both sides. It is defined as the toxic masculinity, as the author of the book defines. It's not necessary, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी आपको उस बुक के बारे में मालूम होगा तभी आपने ऐसे लिखनी है, लेकिन जनरली जो जिस बात के ऊपर मेनली बॉयज विल बी बॉयज, क्यों एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड मिसोजिनी की बात जो है वो आ जाती है इसके ऊपर। और जब हम इस चीज का जिक्र कर रहे हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, तो इससे हमारी मुराद क्या है? बेसिकली मैस्कुलिनिटी जैसे आपने डिफाइन किया कि सोसाइटी उनको एक खास रोल दे रही है, और सारा biology से start करके you have taken it through individual to from family to social to political spheres and everywhere. But the question is that this having too much power in their hands given by the society, it becomes dangerous for themselves too. Now this is the new aspect, that this is something which becomes damaging for men also, and they become less human and humane, as you mentioned in that very good example of Hiroshima and Nagasaki. Jahan tak ye taluk hai ki it were the men who pressed the nuke buttons in 1945. We have a different view about that also. So it's very difficult to say that it is only men that will be. So it's human nature basically. It's human nature basically. Okay, so how does it become damaging to themselves also? Sometimes, like George Orwell in his very famous short story Shooting an Elephant says about a white man, ये colonial empire जिन दिनों ब्रिटिश थे यहाँ पे, उन दिनों की ये short story है कि साहब लोगों से और जो हुक्मरान है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है एक खास किस्म का बिहेवियर. There is a mad elephant in the area, and the sahab, the deputy commissioner or whoever the British officer is there, is supposed to kill that, get that animal killed, और कोई रास्ता लोगों ने उससे एक्सपेक्ट ही नहीं करना. So George Orwell says that when the white man comes to the east, he wears a mask, और वो मास्क उस अथॉरिटी का है, उस सारी अथॉरिटी का है, and his face grows to fit that mask. ये मास्क उसको जो है वो अथॉरिटी देगी,
और लाजमी नहीं कि उसके अंदर उसका फेस जो है पूरा आता है कि नहीं आता, हिज फेस ग्रोज टू फिट इन इट। ये एग्जाम्पल बड़ी जबरदस्त इसके ऊपर सेट होती है। मेन को आई रिमेंबर थ्रू आउट माई चाइल्डहुड एंड बॉयहुड एंड एडल्टहुड, जब भी ये कहा जाता था एडोलेसेंस में, और नहीं भाई, लड़के नहीं रोते, मर्द ऐसे नहीं करते। सो वी आर गिवन अ मास्क and we grow to fit into that. But does that do any good to our own selves as men? Now, बहुत अच्छी जो है मिसाल उसने जो है वो दी थी यहाँ पे इसके अंदर, और नंबर वन मैस्कुलिनिटी की, और नंबर टू इसके अंदर जो मसला पेश आता है साथ ही मिसोजिनी का। As they grow up and they use power, they realize that the opposite gender does not have any of this, and gradually they develop this misogynist attitude that they are less humans, we are more of the humans, and और उसके साथ फिर एक पूरा, अब यहाँ क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त जो इसके ऊपर चल रहा है, जो क्लेमेंटाइन फोर्ड ने जो उठाया है, हाउ डू वी ट्रेन बॉयज टू बी फेमिनिस्ट्स, टू रिस्पेक्ट वुमेन और वुमेन्स राइट्स। ये है मेन डिस्कशन जो जिसने दुनिया को ग्रिप में लिया था बेसिकली, एंड दिस वाज व्हाट दे वर आस्किंग। थोड़ी सी जरा बैकग्राउंड स्टडी इसकी करें। एंड नाउ दैट क्लेमेंटाइन फोर्ड हैज अ बॉय सन of her own, she is asking herself also, this is what I ask myself, that whatever respect I have towards women, how do I train my young boys, my sons, how do I transfer this respect to them? Because they are growing into that mask, they are growing into that mold where they have to behave in a certain way. So ये कहना कि ये जो है इसको कहना कि जी ये प्योरली दे आर वेरी हैप्पी विद दिस रोल, ये भी एक एस्पेक्ट जो है इसके अंदर डिस्कस करने वाला है। लेट्स लुक एट सम ऑफ द अदर आउटलाइंस आल्सो। Alright, so after this wonderful research and outline ideas presented by Usama Sabir, we move on to the next outline by Mariam Javed. It's over to you. Bismillah. Okay. Boys will be boys. That is the topic we all know that. I'm going to just start with a statement, thesis statement. Basically, this phrase "boys will be boys" is being used from centuries. लेकिन अभी recently एक ऑस्ट्रेलियन राइटर एंड जर्नलिस्ट हैं क्लेमेंटाइन फोर्ड, उनकी बुक की वजह से एक न्यू डिस्कशन स्टार्ट हुई, दिस फ्रेज केम इनटू, दोबारा से उस पर डिस्कशन स्टार्ट हुई। तो दैट इज बेसिकली द ओरिजिन जिसकी वजह से अभी बॉयज विल बी बॉयज इज इन डिस्कशन, एंड दैट इज द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच हमारा एग्जाम में भी उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें ये पेपर में टॉपिक भी मिला, बॉयज विल बी बॉयज। हम थीसिस स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो बॉयज विल बी बॉयज, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फ्रेज है, ये नॉट ओनली जस्टिफाइज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हैं उन्हें जस्टिफाई करती है, बल्कि ये बहुत सारे जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं यंग बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, फैमिलीज के लिए, सोसाइटीज के लिए लाती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो यंग बॉयज का है। जब आप उनकी माइंड्स को उस तरह से मोल्ड करते हैं कि बॉयज विल बी बॉयज, तो उसमें बहुत सारे हार्म्स जो हैं वो आप उस यंग लड़के के को भी कर रहे होते हैं विद द सोसाइटी एंड ऑब्वियसली वुमेन। सेकेंडली, थीसिस स्टेटमेंट में मेरा सेकंड पॉइंट ये था कि ऑल्दो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो कि हमारे बॉयज विल बी बॉयज एटीट्यूड की वजह से कल्चर में हमारे आती हैं, लेकिन देयर आर थिंग्स वी कैन डू। हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस कल्चर को बाय इनकरेजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इन यंग बॉयज, उन्हें ट्रेन करके, और बाय प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी को हम इस फ्रेज को नल एंड वॉइड कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, फर्स्ट मेरा पॉइंट इंट्रोडक्शन है। सेकंड जो ओरिजिन ऑफ द फ्रेज है बॉयज विल बी बॉयज, ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये फ्रेज जो है ये फॉर सेंचुरीज हम लोग यूज करते रहे हैं, लेकिन जहां से ये फ्रेज दोबारा से डिस्कशन में आई वो क्लेमेंटाइन फोर्ड हैं, जर्नलिस्ट हैं और राइटर हैं ऑस्ट्रेलिया की। इन 2018 इन्होंने एक बुक लिखी बॉयज विल बी बॉयज, जिसमें इन्होंने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात की, जेंडर इनइक्वालिटी की बात की, किस तरह से कौन कौन से हार्म्स जो हैं वो कॉज होते हैं बाय द फ्रेज जो कि हम यूज करते हैं बॉयज विल बी बॉयज। तो वो सारी डिस्कशन जो है वो इस पे इससे स्टार्ट हुई दोबारा। मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो है कि बेसिकली व्हाट इज द हार्म इन द फ्रेज बॉयज विल बी बॉयज, कौन से ऐसे हार्म्स हैं जो सोसाइटी में
या इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इस फ्रेज से लाए जाते हैं, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है जो ऑथर ने ही डिस्कस किया था कि जस्टिफाई कर देती है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को। अब मैस्कुलिनिटी बेसिकली क्या होती है, जिसे बार बार हम लोग डिफाइन करते हैं कि आपका जो मैस्कुलिन बिहेवियर है दैट इज सपोज टू बी एग्रेसिव आपका होना चाहिए, आपके डोमिनेंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। मर्द जो है वो अब्यूजिव हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सारे बिहेवियर्स हैं इनको एक्सक्यूज किया जाता है। जब घरों में भी बात होती है, जैसे ही बच्चा ग्रो कर रहा होता है वो कुछ ऐसी बात करता है तो हम लोग बड़े प्राउड से कहते हैं हाँ हाँ हमारा बच्चा मार के आ गया किसी को, दैट इज यू नो अ थिंग टू बी प्राउड, ही इज अ बॉय, ही इज सपोज टू डू दैट। जबकि हम फीमेल्स की बात करते हैं तो दे आर सपोज टू बी इमोशनल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, अडेप्टिव होती हैं, लेस प्रैक्टिकल होती हैं। तो दिस इज हाउ आप फेमिनिटी को या मैस्कुलिनिटी को एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद ये एक्सक्यूज करता है कि आपकी इमोशनल और फिजिकल अब्यूज जो आप फीमेल को करते हैं उसको भी एक्सक्यूज करता है। आपकी जो डोमिनेटिंग बिहेवियर्स हैं या टैग्स हैं उनको भी एक्सक्यूज करता है। मैन जो हैं उन्हें एक सर्टन वे में होना चाहिए, दे शुड बी मैनली, दे शुड बी डोमिनेटिंग, दे शुड बी एग्रेसिव। वो सारी चीजें जो हैं उस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ये जस्टिफाई करती है फ्रेज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सेकंड पॉइंट जो है मेरा वो रीइंफोर्सेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हैं, ये दोबारा मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस किए हैं। आप दोबारा से रीइंफोर्स करते हैं कि जो मैन है वो मैस्कुलिन होना चाहिए, ही शुड बी एग्रेसिव, ही शुड बी डोमिनेंट, ही शुड बी प्रैक्टिकल, ही शुड बी अब्यूजिव। इस सेंस में वो लेते हैं। जबकि फेमिनिटी की बात करते हैं तो इमोशनल होना चाहिए, सॉफ्ट है, अडेप्टिव है। वो जैसे ही एक यंग बॉय या यंग गर्ल जो है वो इस दुनिया में आता है, वो जैसे ही होश संभालता है तो वो अराउंड इसी बिहेवियर को या इसी कल्चर को देख रहा होता है और वो ऑटोमेटिकली वही जो नॉर्म्स हैं, हमारी कल्चरल नॉर्म्स हैं, उनसे यही सारी चीजें सीख रहा होता है। थर्डली हमारे जो निग्लेक्ट करता है अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस को। जब आप ये कहते हैं कि मैस्कुलिनिटी जो है वो पार्ट ऑफ मैन्स नेचर है, तो आप उससे किसी हद तक एक अकाउंटेबिलिटी से बचा लेते हैं, ठीक है। बिकॉज मैन आर सपोज टू डू दैट, इट्स ओके इफ ही गॉट इनटू अ फाइट, ही इज अ मैन, ही इज सपोज टू डू दैट। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है वो मैन में आ जाती है। तो दीज आर बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं जो इस फ्रेज की वजह से हमारी सोसाइटी में या एक इंडिविजुअल की लाइफ में आती हैं, वो सारी ये चीजें हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो उसमें हम लोग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करते हैं ओवर डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। एक बॉय की लाइफ में किस तरह से ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को लाता है, इम्पैक्ट किस तरह से करता है, हमारी फैमिलीज को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, हमारी सोसाइटी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, और इंटरनेशनल एरिना में इसकी किस तरह से हाउ इट प्लेज एन इम्पोर्टेंस। हमारे पास जो पहला पॉइंट है इंडिविजुअल इम्पैक्ट ऑन बॉयज, इसमें एक जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक यंग लड़के पे पड़ता है जैसे ही वो होश संभालता है, वो ये है कि आप उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को ही निग्लेक्ट कर देते हैं। आप उसे बार बार ये याद दिलाते हैं कि बॉयज डोंट क्राई, बॉयज आर सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग, बॉयज डू नॉट डू दिस, बॉयज डू नॉट डू दैट। तो वो सारी चीजें फिर इनकरेज करते हैं आपके एक रिस्की बिहेवियर, हार्मफुल एक्टिविटीज जो है उसे इनकरेज किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स और डेथ्स जो हैं वो होती हैं। और दैट इज बेसिकली जिसके लिए हमारा कल्चर और हमारी जो सोसाइटी है जो कि उसे बार बार एक सर्टन बिहेवियर उससे एक्सपेक्ट करते हैं, एक रिस्की एक हार्मफुल एक्टिविटीज का बिहेवियर उससे एक्सपेक्ट करती हैं, तो वो सोसाइटी ही उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है ये है कि आप लिमिट कर देते हैं बॉय के बिहेवियर को, जेंडर को लिमिट कर देते हैं। अभी जो हमारी डिस्कशंस चल रही होती है LGBTQIA के वो जो सारे जेंडर रोल्स हैं उसमें आप लिमिट कर देते हैं कि बॉयज आर सपोज टू बी लाइक दिस, यू नो, दे कैन नॉट बी फेमिनिन, दे कैन नॉट बी सॉफ्ट, दे कैन नॉट बी एम्पैथेटिक, दे आर सपोज टू बी एग्रेसिव या डोमिनेंट होने चाहिए। तो आप लिमिट कर देते हैं बॉय का, एक यंग बॉय का बिहेवियर जो है वो उसे लिमिट करके आप उसे लिमिट कर देते हैं बेसिकली। उसके बाद इम्पैक्ट जो है फैमिलीज में, इससे आपकी डिसफंक्शनल फैमिलीज जो हैं वो क्रिएट होती हैं। आपकी जो गर्ल्स और बॉयज जो हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सोशली कंस्ट्रक्टेड जो आपके जेंडर रोल्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए, उसी में वो
वर्क करेंगे. A girl is supposed to stay at home, a boy is supposed to go out. They are basically हमारी जो socially constructed gender roles हैं, these are the gender roles. थर्ड मेरा पॉइंट ये है कि आप एक्सप्रेस कर देते हैं बॉय के इमोशन को. आप जब एक फैमिली में बार बार उसे कहते हैं कि बॉयज डोंट क्राई. अभी रिसेंटली आई थिंक 2016 या 17 की बात है, एक बड़ी कैंपेन चली थी मीडिया पे कि बॉयज डोंट क्राई का जो ये वर्ड है, वी शुड नॉट यूज दैट वर्ड. दिस इज वाई जो आपके यंग बॉयज हैं वो बहुत ही अर्ली एज से उनके अंदर एम्पैथी जो है, उनके अंदर कंपैशन जो है, उनके अंदर जो सॉफ्ट फीलिंग्स हैं वो आना बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बॉयज जो है उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कम होती है. फिर वो फैमिलीज में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज लाते हैं, सोसाइटीज में एंड डिफरेंट वो स्फीयर्स ऑफ लाइफ में आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स लाते हैं. आपके पास जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी किस तरह से करता है. आपके पास एक कल्चरल नॉर्म्स बन जाती हैं जिसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है मैस्कुलिनिटी को, एग्रेशन को प्रायोरिटाइज किया जाता है ओवर एम्पैथी एंड कंपैशन के ऊपर किया जाता है. एक जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो इसकी की वजह से, बिकॉज आप एक इंटाइटलमेंट जो है वो बॉयज को या मेन को दे रहे हैं कि बॉयज विल बी बॉयज, दे आर सपोज टू डू दिस, यू नो. तो वो एक जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो हमारी रूट्स में फिर आ जाती है, एक सोसाइटी की रूट्स में आ जाती है. आपके पास जो इम्पैक्ट्स ऑन इंटरनेशनल एरिना है, तो इसमें हम बात करें तो आपके पास एक पैट्रियार्कल एटीट्यूड जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आपको मेल पॉलिटिशियंस के थ्रू दिखाया जाता है. जैसे सर ने एग्जांपल दी तो वो एक दो ही ऐसी एग्जांपल हैं जिसमें फीमेल्स जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर दिखाती हुई नजर आती हैं. आप उसके अलावा देख लें, वेदर इट इज हिटलर, वेदर इट इज प्यूटन, वेदर इट इज मतलब कोई भी आप उसे उठा के देख लें, वेदर इट इज डोनाल्ड ट्रंप, तो सारे जो एग्रेसिव बिहेवियर्स जो है ना वो मैन की तरफ से जब दिखाए जाते हैं तो बहुत सारी नेशंस जो हैं वो सफर करती हैं उसकी वजह से. सेकंड मेरा ये है कि आपके ये बिलीव किया जाता है बाय जेंडर स्टडीज के जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि फीमेल्स जो हैं वो दे आर एबल टू हैंडल द अफेयर्स मोर डिप्लोमेटिकली देन मेल्स. एंड सम पीपल ऑल्सो क्लेम कि अगर फीमेल्स जो हैं वो इंचार्ज होती बिफोर World War I एंड World War II तो ये वॉर्स होती ही नहीं सिरे से, बिकॉज मैन लाइक हिटलर एंड other men were the leaders of the world. That's why these drastic जो आपके पास वॉर्स हैं वो हुई. मेरे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो इम्पैक्ट्स ऑफ द फ्रेज इन पाकिस्तान. जब आप एक ऐसे इस तरह से लिखते हैं तो आप पूरा उसे ओवरऑल मेरा ख्याल है रिसर्च करने के बाद आपको पाकिस्तान का एक फैक्टर जो है उसे दिखाना होता है कि किस तरह से ये चीज जो है वो पाकिस्तान में इम्पैक्ट कर रही है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं. आपके पास जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसमें यह है कि वुमेन डू नॉट फील सेफ नाइदर इन देयर होम्स नॉर स्ट्रीट्स नॉर वर्क प्लेसेस. आपकी जो वुमेन है पाकिस्तान में, बिकॉज मैन ट्रीट देम एज अ प्रॉपर्टी, उन्हें ओनरशिप, उन्हें कस्टोडियनशिप ओवर फीमेल्स दी जाती है, तो वो समझता है कि हर जगह पे मुझे वो कस्टोडियनशिप दी गई है और हर जगह जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो स्ट्रीट पे भी वुमेन को हरास करता है, वो वर्क प्लेस पे भी वुमेन को हरास करता है, और इवन घर में भी जो फीमेल का जो, तो वो हर जगह पे जो वुमेन है वो आपको सफर करती हुई नजर आती है. घरों में भी उसका जो रोल है वो इंफीरियर नजर आता है, आपका वर्क प्लेस पे भी उसका रोल इंफीरियर नजर आता है. आप जॉब्स में चले जाएं, वेजेस में चले जाएं, शी इज ऑलवेज इंफीरियर देन मैन. और क्यों इंफीरियर है? बिकॉज बॉयज विल बी बॉयज एंड वो उसी तरह से उसे चला रहे हैं जैसे उन्हें ट्रेन किया गया मेंटली. सेकेंडली, इन जेंडर रोल्स की वजह से वुमेन के अगेंस्ट जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो बहुत ज्यादा होती है पाकिस्तान में. आपकी ऑनर किलिंग की एग्जांपल्स जो हैं उसमें आपके पास कंदील बलोच की एग्जांपल आ जाती है, बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं. एवरी डे वुमेन आर बीइंग किल्ड बाय देयर ब्रदर्स एंड फादर्स एंड ऑनर किलिंग के नाम पे उन्हें मार दिया जाता है, बिकॉज दे फील दे आर कस्टोडियन ऑफ वुमेन एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग जिससे वो अप्रूव नहीं करते. सेकेंडली, आपकी जो वुमेन है उन्हें डोरी के नाम पे मर्डर किया जाता है, उनपे एसिड्स फेंके जाते हैं. एक मेल जो है जब उसकी का कोई प्रपोजल या कुछ एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो वो उस लड़की की जिंदगी को खराब कर देता है बाय थ्रोइंग एसिड्स, और उसके पीछे
जो आप पीछे उसकी मेंटल जो ट्रेनिंग जो है वो शुरू से फ्रॉम अ वेरी यंग एज वो की जाती है, एंड उससे बताया जाता है कि बॉयज विल बी बॉयज एंड बॉयज आर सपोज टू एक्ट इन दैट वे। आप रेप्स की बात करें तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेप्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मेल जो है वो अपना डोमिनेंट बिहेवियर जो है वो उसको सेटिस्फाई करना चाह रहा होता है, मोर देन सेक्सुअल प्लेयर वो सिर्फ अपने डोमिनेंट बिहेवियर को सेटिस्फाई करना चाह रहा होता है। मेरे पास जो सी पॉइंट है उसमें डोमिनेंट पेट्रियार्कल कल्चर इन पाकिस्तान है। इसमें आप अपनी फैमिलीज की एग्जांपल ले लें, सोसाइटीज की एग्जांपल ले लें, जिरगास की एग्जांपल ले लें। आपकी जो जिरगास हैं वो मेल्स जो हैं वो लीड करते हैं, वुमेन को पनिश किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है फॉर क्राइम्स जो कि कमिट किए जाते हैं मेल्स को। तो वो अथॉरिटी जो है वो सोसाइटी उन्हें देती है कि यू आर द कस्टोडियन एंड यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ वुमेन, यू कैन डू एनीथिंग अगेंस्ट देम। आपके पास जो डी पॉइंट है उसमें रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन है, जो कि मैन को सुपीरियर इन पाकिस्तान वी हैव इस्लाम, हमारा रिलीजन इस्लाम है। इस्लाम ने वुमेन का कस्टोडियन मैन को जरूर बनाया है, लेकिन उसके साथ में उससे बाउंड भी किया है कि आप उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, आप उसे प्रोटेक्ट करें, उसे रिस्पेक्ट दें, उसे ट्रीट देम विद लव, उसके सारे जो राइट्स जो इस्लाम ने कहे हैं वो उसे दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे हमारे मेल उलेमा हैं जो कहते हैं कि वुमेन जो है उसका जो रोल है इन इस्लाम वो बड़ा लिमिटेड कर देते हैं, उसे बड़ा इंफीरियर कर देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान एज अ सोसाइटी, पाकिस्तानी पीपल एज अ सोसाइटी उस चीज को सफर करते हैं, एंड वुमेन जो है जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो प्रिवेल होती है, जिसकी वजह से वे फॉरवर्ड नॉर्मली हम एब्स्ट्रैक्ट एसेस में नहीं लिखते, लेकिन ये जो बुक है बिकॉज इसमें हम लोगों ने जैसे सर कह रहे थे अभी कि इट स्टार्टेड अ डिबेट कि किस तरह से हम जो ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है इसको हम खत्म कर सकते हैं। ये जो डिबेट है इस वजह से मैंने एक वे फॉरवर्ड इसका लिखा था। इसमें सबसे पहले कि आप रीथिंक करें कि सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर रोल्स जो हैं उन्हें रीथिंक करें, एनकरेज करें इमोशनल इंटेलिजेंस इन यंग बॉयज, उन्हें स्ट्रेस मत करें, अगर वो इमोशनल हो रहे हैं लेट देम क्राई, लेट देम फील थिंग्स, डू नॉट लिमिट देयर इमोशनल इंटेलिजेंस। आपके पास सी जो है जैसे बी पॉइंट में जैसे उन्होंने वो एक कैंपेन चलाई थी थ्रू आउट द वर्ल्ड के बॉयज डू नॉट क्राई, ये स्टेटमेंट जो है आप यूज ना करें। तो इस तरह के कुछ और कैंपेन्स को यूज करके आप इनकरेज कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इन द यंग बॉयज, एंड दीज बॉयज आर गोइंग टू टर्न इनटू मेन, एंड दीज मेन आर गोइंग टू बी पिलर्स ऑफ सोसाइटी, और चेंज जो है वो इसी तरह से आएगा। मेरे पास जो सी पॉइंट है वो ये है इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट ऑफ जेंडर स्टडीज इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स। आपके पास अगर जेंडर स्टडीज किसी की है तो उसमें एक डिबेट है कि आप जेंडर स्टडीज को इंटीग्रेट करें या आप उसे एज अ सोलो सब्जेक्ट लें। तो मेरा आई बिलीव दैट अगर आप जेंडर स्टडीज को डिफरेंट डिसिप्लिन्स में या डिफरेंट वर्कशॉप्स में पढ़ाना स्टार्ट कर दें, या डिफरेंट जगह पे आप जेंडर इक्वालिटी की बात करना स्टार्ट कर दें, वर्कशॉप्स या एज अ सब्जेक्ट देना शुरू कर दें, तो एक बहुत अच्छा चेंज जो है वो आप सोसाइटी में देख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो प्रेस है उसे आप इंक्रीज यूज कर सकते हैं इंक्रीज करने के लिए अवेयरनेस को, और ब्रेक करने के लिए स्टीरियोटाइप्स को। प्रेस में आपके पास ड्रामाज आ जाते हैं, आपके पास शोज आ जाते हैं जहाँ पे ये डिस्कशंस जो हैं ये स्टार्ट की जाती हैं, जब एक औरत को हमेशा रोते हुए दिखाया जाता है और एक मर्द को हमेशा से स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव दिखाया जाता है प्रेस में या आपके मीडिया में, उस चीज को दिखाया जाता है। तो वही जो मीडिया है वो आपकी सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। तो अगर आप उस मीडिया को चेंज करें तो आपकी अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज हो सकती है और आपके जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। So this is my outline. If anyone has question now, they can ask. जी आप जरा क्वेश्चंस जो हैं वो कर लें so that मरियम जावेद could answer them, जो लोग मीटिंग में हैं। Now we have here the dentist शाहजेब अली पूछ रहे हैं कि what about Irma Grease, the cruelest woman of Nazi? What अच्छा, about ये एक्सेप्शंस जो है मैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि जो एक्सेप्शंस है ना ये आपको नजर आती हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल उसको करते हैं ना, चेक करते हैं, अगर आपके पास लेट्स से कि आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर आप
पीछे हिस्ट्री उठा के देखें, आपके पास 100 मेल लीडर्स हैं और उसके अगेंस्ट जो 4 फीमेल लीडर्स हैं वो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रही हैं, तो दैट इज समहाउ वो इतना ज्यादा वो आप उसे इतनी वेटेज नहीं देते। सेकेंडली जो जेंडर रोल्स है ना, इन्हीं को चेंज करने की जरूरत है। व्हाई डू वी हैव टू से कि मेल इज क्रूअल एंड फीमेल इज सॉफ्ट? व्हाई डू वी हैव टू से? अगर ये एग्जांपल्स जो हैं, अगर वुमेन अफनाजी जो है वो क्रूअलेस्ट हो सकती है, तो एक वुमेन जो है वो प्रैक्टिकल भी हो सकती है। एक मर्द जो है वो ही कैन क्राई, एक मर्द जो है वो कंपैशनेट हो सकता है, ही कैन बी एम्पैथेटिक। तो ये जो जेंडर रोल्स है ना, मुझे नहीं लगता कि हमें इस डिस्कशन में भी पढ़ना चाहिए कि ही शी वाज द क्रूएलेस्ट वुमन। दिस इज नॉट अबाउट डिफेंडिंग यू एज अ मेल और डिफेंडिंग मी एज अ। थोड़ा सा हम डिविएट कर रहे हैं, वी आर मूविंग मोर इनटू फेमिनिज्म, और ये जरा थोड़ा सा हम टॉपिक से जरा हटते जा रहे हैं। ये अटेंडीज जो हैं उनको भी देखना चाहिए कि हम इस वक्त फेमिनिज्म एग्जैक्टली डायरेक्टली जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम हमें जो है डायरेक्टली वो नहीं कर रहे। जी। और सेकेंडली जब आप एक ऐसे को इंग्लिश ऐसे को डील करते हैं तो आपको फेमिनिस्ट नहीं होना होता। आप जब एक लड़की की बात कर रहे हैं, उसके राइट्स की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी कह रहे हैं कि बॉयज आर आल्सो बीइंग सप्रेस्ड। अगर एक लड़के की इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको आप सप्रेस कर रहे हैं, तो वो आप उसके लिए भी गलत कर रहे हैं। इफ ही इज अनएबल टू क्राई, तो दैट इज समथिंग यू आर डूइंग रॉन्ग टू हिम। अगर आप उसे ओवर बर्डनाइज कर रहे हैं, जैसे ही वो एक यंग लड़का जैसे 18 या 19 ईयर्स का होता है, आप उसे ओवर बर्डन कर देते हैं। यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर सिस्टर, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर family, now you are supposed to be earning, you are supposed to be supporting family. Why are we even burdening them? Because ये रोज जो जेंडर कंस्ट्रक्टेड रोल्स हैं, इनको चेंज करने की जरूरत है। अगर आप वुमेन को एम्पावर करेंगे तो आप भी थोड़े से लेस बर्डन हो No, we जाएंगे। are going into feminism. We are going too much into feminism now. यहाँ पे जो है शादेब अली, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी सारे वो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आप स्टार्ट हो गया, मेल और फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन। लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी आर एक्चुअली हियर फॉर। वी आर डिस्कसिंग दिस ऐसे टॉपिक, बॉयज विल बी बॉयज, और इसके ऊपर हमने जो है डिफरेंट लेयर्स ऑफ, ठीक है, इसके अंदर फेमिनिज्म यकीनन 30 to 40% डिस्कस होती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखें कि इससे रेलिवेंट हमने साथ साथ जो है वो रहना है। मरियम जावेद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी थॉटफुल आउटलाइन। और इसके ऊपर अब क्वेश्चन आंसर जो चल रहे हैं वो आप चैट में जो है वो उनके जवाब दे लें। रिकॉर्डिंग में जब ऑडियंस देख रही होती है तो उनको चैट का नहीं पता चल रहा होता, सो हम क्वेश्चन जो है मैं बाज़ औक़ात पढ़ के सुना देता हूँ। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट आउटलाइन बाय तैयबा इमरान। Let's hear what she has to say on this. It's over to you, Taiba, now. Bismillah. Good morning and Assalamu alaikum. Hope you are all doing well. I am Taiba Imran and I'm thankful to Sir Arif, who has provided me an opportunity to share my work at this level. This is such an fantastic platform that not only the aspirants of competitive examinations, but also the other people who are associated with academics on different levels, they get benefit from this. So thank you, sir, and I'm honored to be a part of it. So let's move to the topic, which is an abstract essay, Boys Will Be Boys. Before going to this, before going to in depth, we will we will just have to know about what is what does this phrase boys will be boys means. It is not a new concept. Actually, this concept has been discussed far from centuries, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस चीज को जिन्होंने वक्तन फवक्तन इस चीज को हाईलाइट किया है, लेकिन हम लोगों के लिए पहली दफा ये चीज इस तरह की सामने आई है। सो वी मॉक्ड इट एज स्टूडेंट्स या एज डिफरेंट अपने रोल्स में हमने इस चीज को काफी, इस पे मीम्स को और काफी चीजों को इस पे हमने शेयर और इनकरेज किया। बट इट इज नॉट अ still a phrase, it is an emotion that makes someone dominant and others repressive. तो ये चीज एक स्टबर्ननेस को, एक जेंडर के स्टबर्ननेस को शो कर रही है या उसको इनकरेज कर रही है, और जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उस चीज को ये प्रमोट करने की कोशिश करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो
Coming to the thesis statement into introduction, boys will be boys justifies the inappropriate and traditional behavior of men towards the society and particularly towards the other genders. यहाँ पे हमारे पास एक mindset है. The patriarchal mindset flourished in this world due to the harmful gender stereotypes and the culture of toxic masculinity. However, अगर इसको हमने change करना है, तो we have a way forward for it. It is important to challenge this mentality by inculcating values into the upbringing of the upcoming generations. So it is very important कि हम इस mentality को tackle करें बजाय इसके कि हम किसी एक gender को mock करें. हमें चाहिए कि हम उस जो सोच वो लेकर आ रहे हैं, हम उसको अपनी upcoming generations में वही जैसे सर ने बोला था कि आने वाले लोगों को सिखाएं कि how to respect others, other genders. तो उस चीज को हमें improve करने की जरूरत है, mentality पे काम करना चाहिए. So the point 2 is deconstructing this term that why boys will always be boys. इसमें हमारे पास 3 ऐसे factors हैं जिसको हम discuss करते हैं. सबसे पहले तो उनका biological makeup. Boys are considered strong. Their physique is considered different from the other genders. उनका जो genital makeup है, that makes them different from others. The next factor that is the nature of the men, which is aggressive, and the next thing is the upbringing of the children in the male-dominated society. तो ये चीजें जो ये factors हैं, ये consider करते हैं कि हमेशा the boys will always be boys. So let's get into the manifestation of this topic at different levels, including individual levels. तो अगर हम individual level पे boys की बात करते हैं या men की बात करते हैं, तो हमेशा हमें पता लगता है कि guardians and protectors are always men. इसके अंदर हम इस argument को support करने के लिए I have 2 references. पहली चीज हम अगर daily life examples में से देखें तो home heads जो हैं they are always men. Like your fathers, your brothers, etc. They are always a part of the decision making processes. और फिर जो security related matters हैं, the Journal of Experimental Social Psychology in 2018 they have published an article and they related that security related matters are always owned by men. Like अगर politics में देख लें, घरों में देख लें, अगर commercial areas के अंदर हम देखते हैं, even building के security guard से लेकर आपके army के head chiefs तक सब जो हैं वो almost 99.9% they are males. The next point B, is that power is always associated with male and the prestige with female. For example, Journal of Interpersonal Violence in 2019, उन्होंने इस phrase को boys will be boys को specifically use किया, and I have quoted that a statement from there that men who believed in the traditional norms, including boys will be boys mentality, were more likely to minimize the severity of sexual assault and blame the victim. तो अगर वो डेली लाइफ के एग्जांपल में हम देखें तो ऑनर किलिंग ऑफ फीमेल बाय मेन. अब पावर की जो बात है वो ऑनर किलिंग है, और जो वहाँ पे जो प्रेस्टीज है वो ऑनर से हम उसको रिलेट करके तो ये बताते हैं कि हमेशा पावर इज एसोसिएटेड विद मेल एंड प्रेस्टीज विद फीमेल. The third point is that at individual level is that the concept of superiority and living a fearless life is always associated with the boys. So still, this concept, the boys will be boys, has been used by the journal Sex Roles in 2020. और उन्होंने ये statement quote की थी कि college men who believed in the traditional gender norms, including the idea that boys will be boys, were more likely to engage in the sexual coercion and aggression. तो उनके अंदर superiority, dominance की चीज जो है ये social construction की वजह से भी है, और एक जो हमने एक ट्रेडिशन सेट किया हुआ है ये उसकी वजह से भी. Now studying the manifestation of boys will be boys at family level, तो हमेशा हमें पता चलता है कि जब whenever a baby boy is born, he is celebrated at the time of birth. Celebrations begin like from home, like distributing sweets, और फिर name calling ceremony से लेकर हर चीज जो है वो एक अलग organized way में boys के सामने present की जाती है. फिर जो हमारी अपनी families हैं, they give leverage to boys than girls. For example, education, nutrition, dressing, exposure. These are some of the points जहाँ पे boys are always given a special position.
अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमेशा अगर बहन भाई होंगे तो उसमें बॉयज ही होंगे, न्यूट्रिटिव वैल्यूज हमेशा BMI के हवाले से बॉयज की बेहतर होंगी, सो एज द अदर पार्ट. The next point, we will study the boys will be boys at the social and cultural level. सोशल इंस्टीट्यूशंस हमेशा जो है वो लेवरेज देते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर. एक फेडरल जज के पास एक केस गया था 2019 के अंदर मोंटाना के अंदर. उसका वर्डिक्ट उसमें यह था कि एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हु वाज मोर देन 55 इयर्स ऑफ एज, ही रेप्ड अ माइनर गर्ल. तो जब उसके ऊपर वर्डिक्ट आया था तो उसमें जज का स्टेटमेंट ये था कि भाई हमने इसको 1 साल की सजा दे दी है, बट इट इज नॉट, मतलब अगर उसकी एज का फैक्टर देखा जाए तो दैट इज टू मच. तो ये इसको क्रिटिक्स ने जो है बहुत बुरी तरह से इस स्टेटमेंट को मॉक किया था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस आर गिविंग लेवरेज टू बॉयज या मेन इन द सोसाइटी. तो रिलीजियस सेटअप इज ऑलवेज मैनिपुलेटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयज विल बी बॉयज. अगर हम इस्लाम के अंदर देखें तो इस्लाम में हमने ओनर करार दे दिया है अपनी फीमेल्स को इंस्टेड ऑफ कस्टोडियंस. तो वो एक डोमिनेंट शेप्स आती है. बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर भी हम इस चीज को देखते हैं. अभी हमने ईरानियन रिवॉल्ट्स देखी हैं जो हम इसके अंदर केस स्टडी की तरह से यूज कर सकते हैं हिजाब के ऊपर. दो हिजाब इज अ पर्सनल मैटर बट स्टिल द गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग दैट. और फिर उन्होंने रेबल्स को फेस किया है और वहाँ पे जो हालात खराब हुए वी आर अवेयर ऑफ दैट. कैथोलिक क्रिश्चियंस और उनकी जेंडर हायरार्की जर्नल ऑफ थियोलॉजी 2022 के अंदर उन्होंने ये प्रेजेंट किया है कि अब कैथोलिक्स के अंदर जो फादर्स और नन्स का कॉन्सेप्ट है, लाइक द फादर्स ऑफ चर्च आर अलाउड टू मेक फैमिलीज नाउ बट द नन्स ऑफ कॉन्वेंट आर नॉट अलाउड. तो ये डिफरेंट स्पेसिफिक रोल्स हैं जो बता रहे हैं कि डोमिनेंस जो है वो हमेशा मेल के साथ एसोसिएट कर दी जाती है एंड बॉयज आर ऑलवेज बॉयज एंड मेन आर ऑलवेज मेन. तो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स भी जेंडर है, अगर जेंडर्ड है. इसमें व्यूअरशिप के स्टैट्स को अगर हम देखें मैचेस के तो वी ऑल आर अवेयर कि हम मेल फुटबॉल मेल जो फीफा कप है उसको कितना लेवरेज दे के देखते हैं या उसको कितना हम टाइम स्पेयर करके देखते हैं, जबकि अगर उसी के मुकाबले में फीमेल्स का मैच होता है तो फिर दे डू नॉट गेट व्यूअरशिप एज कंपेयर टू मेल. So the point D here is that history is glorified by the achievement of men, though women were also the equal contributors. तो यहाँ पे हमें सबको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, बट वी नेवर नो कि रजिया सुल्ताना ने क्या किया था, though she was also somewhere played an important part in Indo-Pak history or somewhere. So media has always depicted superior gender because media is run by boys. अब depiction हम करते हैं gender roles की. यहाँ पे एक book का reference है The Influence of Media on Views of Gender by Daphna Lemish. She quoted कि किस तरह से different gender roles को हम media पे depict करते हैं. Like हमने हमेशा जो top notch के shows होते हैं they are always headed by boys. बहुत 99% ऑफ चांसेस कि वो मेल डोमिनेटेड होते हैं. लेकिन जो प्राइम टाइम के अलावा के शोज होते हैं जो न्यूज कास्टिंग वगैरह होती है दैट इज गिवन टू ऑलवेज वुमेन. तो मीडिया के अंदर जो जेंडर रोल्स हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर लाइक मेकिंग स्पेसिफिक स्टीरियोटाइप्स और कुछ खास किस्म की एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर जिसके अंदर औरत को या फीमेल्स के रोल को लिमिट कर रहे हैं और मेल के रोल को जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं. That has been explained well in in an article Gender Advertisement by J. Delaney. अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर बात करते हैं. तो पॉइंट नंबर 6 कि एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स आर मोस्टली हैंडल्ड बाय मेल मेजॉरिटी. इसके अंदर डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट रेफरेंसेस को मैंने कोट करने की कोशिश की है. Glass Escalator is a book written by Christine L. Williams और उसके अंदर जेंडर और प्रोफेशंस को difference उसमें किया. Like male have opportunity to get into any kind of profession they want, but the females are only limited to either teaching or nursing. So gender, फिर इसके बाद gender pay gap in public administration. It is written by Grant W. Russell and Jen Lee Wang. इसके अंदर उन्होंने बताया कि एक ही काम के लिए जो पैसे हम जो फीमेल को जो वेज हम दे रहे हैं उससे डबल हम मेल को ऑफर कर रहे हैं.
क्यों? Because these all administrative affairs are decided by, and these all policies are decided by the male dominating society. So a book worthy to quote here, Women in Public Administration and International Perspective, which was edited by Evan M. Berman and Maria J. They both quoted the experience of women in public administration around the world and discusses the challenges how they face in the male dominated environments. So these points can be mentioned in any kind of like article or any kind of essay we want to write. The last point here is that legislation in the favor of men is not passed because men will always be men. I will quote here a specific incident that happened in 2022 meeting held by UNDP on gender equality. Irony was that the whole room was set by men, headed by men, chaired by men, assisted by men, but the policy was the policy agenda was to discuss how to make women efficient, like women, how to increase the role of women in the society. So एक meeting है, मतलब male dominated men हम decide करेंगे कि what the women do in the future. So like women protection bill in Pakistan, हमने देखा है कि वो कितनी मुश्किलों से पास हुआ है, और we all have seen that legislation in the favor of women is not passed because men will always be men. So to conclude my stance here, I will quote. I have quoted a dialogue of a movie which was released in 1935, and it was named. The movie name is "Boys Will Be Boys." So here is a short poem. Boys will be boys. It's often said. They'll act silly and use their head. They'll jump and run and make some noise. For them, it's just a source of joys. Like the last two lines, कि वो अपनी आवाज ऊंची करेंगे, उनको और फिर वो चले आवाज ऊंची करेंगे और वो निकल जाएंगे. क्यों? Because it is a source of joy for them to suppress others. Why? Because boys are always boys. Over to you, sir. Thank you. Thank you so much, Taiba Imran. It was a very good research. और again मैं बार बार चेक कर रहा होता हूँ कि ये कहीं जेंडर स्टडीज का एकेडमिक मामला तो नहीं चल रहा सारे का सारा लेकिन इट इज नॉट. योर रिसर्च इज क्वाइट जेन्युइन और बहुत अच्छी रिसर्च है इसके ऊपर. यू इंट्रोड्यूस सम न्यू आइडियाज. मैं हंस रहा था इसके ऊपर, ये जो लास्ट है ना मीटिंग हेल्ड बाय यूएनडीपी, इसके ऊपर काफी सारे कार्टून्स भी आए थे कि जो है a room full of men and they are going to decide the role of women in society. और मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि men are everywhere in administration and everywhere in all this, तो this situation is changing and soon it will change even more. और ये जो situation है ये tilt हो रही है. If you look at the northern western Europe, so you will find out it is almost not even 40%, 50%. फिनलैंड की अगर मिसाल रहे तो वहां तो तकरीबन 60% है. नॉर्वेजियन लेजिस्लेचर को देख लें तो उसके अंदर भी तकरीबन 60% आपको बेल्जियम में, और इस तरह से आपको इन सारी जगहों पे जी फिनलैंड में सारी मिनिस्टर्स जो हैं फीमेल हैं. सो थिंग्स आर चेंजिंग. और अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज में बात जगहों पे फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स आर. तो ये सेंचुरी मानी जाती है 21st सेंचुरी. 20th और 19th ये तो रही है मेल डोमिनेटेड, बट एक राइटर ये भी लिखते हैं कि 21st सेंचुरी इज द century of the transformation when you will be finding women far more and even more than men in different areas. So it's a very good research, I must say. Thank you very much, Taiba, for your wonderful work. A lot of effort has gone into this and excellent work. Taiba Imran की outline से related मैं एक दो चीजों का जिक्र करना चाहूंगा. Although she is the new entry in the researchers group, इसी तरह से आप लोग भी अगर अच्छी आउटलाइन दिखते हैं और आप महसूस करते हैं कि इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं इस मीटिंग में इस कॉन्फिडेंस के साथ, तो मोस्ट वेलकम, मुझे बताएं. मैं आपकी आउटलाइन देखता हूं और अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग भी इसमें इसी तरीके से.
आ सकते हैं। सिर्फ एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा सारे सुनने वालों के लिए और जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए भी, कि ये जो रेफरेंस जिस तरह से दिया हुआ था उसके अंदर मुझे जर्नल्स के नाम नजर आ रहे थे। बहरहाल मैं, मेरे अंदर का एग्जामिनर जो है ना वो नहीं रह सकता और मैंने पॉइंट आउट जरूर करना होता है। जर्नल का नाम नजर नहीं आना होता, दैट इज जस्ट अ पब्लिशर। हमें जरूरत होती है ऑथर की, आर्टिकल का नाम और ईयर। अब किसी ना किसी शख्स ने तो जाहिर है वो आर्टिकल लिखी है ना, जर्नल ने खुद नहीं लिखी। और इसी तरीके से जो है वो वाला जो उसका आर्टिकल का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से जर्नल इज जस्ट अ पब्लिशर, जैसे डॉन है तो डॉन इज जस्ट अ पब्लिशर, तो उसकी जरूरत नहीं होती। इसलिए जर्नल का नाम अवॉइड करें एंड ट्राई टू राइट द ऑथर्स नेम। क्रेडिट मस्ट ऑलवेज गो टू द रिसर्चर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद जो है वो आर्टिकल का नाम जो है वो साथ देना होता है उसके अंदर। सो ये एक छोटा सा नोट था। नेक्स्ट प्रेजेंटर इज अली रजा, एंड दैट वुड बी द लास्ट आउटलाइन फॉर टुडे। एक चीज मैं जरा मेंशन करना चाहूंगा पेशतर इसके कि अली इसको स्टार्ट करे। ये तब जो प्रेजेंटर्स हैं उन्होंने रेड में ऊपर लिखा हुआ है कि जो ब्लू में लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ये सिर्फ आउटलाइन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च है। आपकी एक्चुअली देख लें, जो आउटलाइन होती है वो हेडिंग होती है और उसके बाद सब हेडिंग होगी बस। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये एग्जाम में आपने आउटलाइन में नहीं लिखना होता, क्योंकि ये मुझे इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि बहुत से लोग ये मुझे जो आउटलाइंस दिखा रहे हैं उसमें ये सब कुछ लिख के लाते हैं और फिर कहते हैं सर आपके ऐसे डिस्कशन फोरम में ये लिखा होता है। भाई ऐसे डिस्कशन फोरम आपके पास रिसर्च पहुंचाने का एक तरीका है, एग्जामिनेशन की आउटलाइंस नहीं है ये। तो यहाँ पे अली ने भी मेंशन किया है, मरियम जावेद ने भी मेंशन किया था, उसामा साबिर ने भी मेंशन किया था कि ये ब्लू वाली जो है वो आउटलाइन का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ आज की इस मीटिंग में आपके सामने रिसर्च प्रेजेंट करने का तरीका है। थैंक यू। सो इट्स ओवर टू यू अली नाउ, बिस्मिल्लाह। Assalamualaikum everyone. As mentioned that sentences written in blue are not outlines part, let's move toward the topic. I fragmented this topic into 7 parts. On the very first, there is introduction. On the second number, I discussed the rationale of the topic, and in the third, I discussed why female hold inferior position to males, and in the fourth heading, I mentioned how boys will be boys behavior manifested at family level. Then at the fifth, I showed how it is manifested in our society, and at the sixth position, I manifested uh, how it is manifested at national level, and then there is conclusion. So I'll start from the second point. In our society, boys are given impunity and preferred over girls. For example, if a boy slap his female member of his family, and when female member report this act of his boy member to his elders, and elder just say that he's a boy, he can do it, you have to ignore him. फिर थर्ड पे मैंने ये बात की हुई है कि किस तरह फीमेल्स होल्ड करती हैं इंफीरियर पोजीशन टू मेल्स। मेरा 3A पॉइंट है कि वुमेन की फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जो उनको डिपेंडेंट कर देती हैं मेल्स पर। जिस तरह कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे फीमेल फिजिकली वीकर होती हैं मेल से, और उनको मेन पे रिलाय करना पड़ता है, और उनकी बायोलॉजिकल कंडीशन ऐसी होती हैं, जिसकी एग्जांपल ऐसी है कि इन द मेंस्ट्रुएशन पीरियड वुमेन कुडंट फोकस ऑन द अदर थिंग्स देन themselves, so they have to rely on the males for certain things. Then my 3B point is that historically women को ऐसा सिखाया जाता है कि वो मेल पर डिपेंडेंट हैं। इसकी एग्जांपल पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म एक थ्योरी है जिसमें उन्होंने बात की हुई है कि हम वुमेन को कभी भी एम्पावर नहीं कर सकते जब तक हम उनको ये फील कराना ना छोड़ें कि वो स्पेशल क्रिएचर हैं। देन मेरा 3C पॉइंट है कि जो बेबी गर्ल्स होती हैं वो अपनी मदर से सीखती हैं
मदर से उनमें ये बिहेवियर इंसिनुएट कर दिया जाता है कि आप अंडर द अथॉरिटी ऑफ मेल्स हैं। देन मेरा 3D पॉइंट है कि हम रिलीजियस टीचिंग्स को यूज़ करते हैं वुमेन को डोमिनेट करने के लिए। इसमें निखत स्टार ने अपने एक आर्टिकल हाफ ऑफ अ मैन में मेंशन किया है, वी आर यूजिंग रिलीजन टू स्कम द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, लाइक तालिबान सेड वुमेन आर हाफ मैन। अब मैं मूव करता हूँ अपनी फोर्थ हेडिंग की तरफ, जिसमें मैंने बात की है कि हम कैसे बॉयज विल बी बॉयज बिहेवियर को एट अ फैमिली लेवल पे मैनिफेस्ट करते हैं। मेरा 4A पॉइंट है कि हमारी फैमिलीज में मोस्टली बॉयज को प्रिविलेज हासिल होती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ फूड, और इसमें गर्ल्स की एजुकेशन को इग्नोर किया जाता है और उनकी डाइटरी नीड्स को भी इग्नोर किया जाता है। मोस्टली फैमिलीज में ऐसे होता है कि अगर किसी अच्छे स्कूल में बच्चे को एडमिशन करवाना हो और बॉय और गर्ल में कंपैरिजन हो, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम बॉय को अच्छे स्कूल में डालें। देन मेरा 4B पॉइंट है कि हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में एक सेट पैटर्न है कि हम बॉय को ही प्रेफरेंस देते हैं। इसमें जैनब सब्जवारी ने अपने एक आर्टिकल में व्हाई वुड अ सन डू टू मी दैट अ डॉटर वांट, उसमें इन्होंने बात की है कि जो बॉयज होते हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना होता है उनकी ओल्ड एज में, तो इसलिए, और गर्ल्स ने शादी के बाद मूव कर जाना होता है, तो मोस्टली पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम बॉयज़ को अच्छी तरह एजुकेट करें ताकि वो हमारा बुढ़ापे में सहारा बन सकें। देन मेरा 4C पॉइंट है कि गर्ल्स को इनहेरिटेंस में भी शेयर डिनाई किया जाता है फैमिली लेवल, जिसमें इंतसाब शाही ने अपने एक आर्टिकल डिनाइड इनहेरिटेंस में बात की है कि इस्लाम के क्लियरली डायरेक्टिव्स हैं कि वुमेन को इनहेरिटेंस में उनका शेयर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द फीमेल को डिनाई किया जाता है कि उनको अपना इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं मिल सकता। देन मेरा 5th हेडिंग है कि किस तरह बॉयज विल बी बॉयज बिहेवियर हमें देखने को मिलता है सोसाइटल लेवल पे। मेरा 5A है कि जो हमारी सोशल नॉर्म्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं वुमेन्स की लेबर पार्टिसिपेशन में। इसमें सिल्विया रेदेली ने एक आर्टिकल लिखा था, इन पाकिस्तान वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन वर्कफोर्स रिमेन्स लो 2021। इसमें उन्होंने बात की थी कि जब वुमेन अपनी जॉब की सिलेक्शन कर रही होती हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें माइंड में रख के ये सिलेक्शन करना पड़ती है, जैसे कि ट्रेडिशनल ऑनर कोड्स हैं और सोसाइटल बैरियर्स हैं जो बाद में उसको अपना काम अच्छी तरह से करने नहीं देते। देन मेरा 5B पॉइंट है कि सोसाइटी ने ये डिटरमिन किया हुआ है कि औरतों का रोल सिर्फ बच्चों को पालना है और अपनी सारी ज़िंदगी घरों में गुजारनी है। मैं इधर डॉक्टर मसूद गोंदल को कोट करना चाहूँगा, जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उन्होंने बात की है कि मोस्टली 80% जो मेडिकल ग्रेजुएट्स होती हैं वो वीमेन होती हैं, लेकिन शादी के बाद सिर्फ 20% गर्ल्स कंटिन्यू करती हैं प्रोफेशन को लेके और बाकी की बस छोड़ देती हैं और घरों में पड़ी रहती हैं। देन मेरा C पॉइंट है कि सोसाइटी में सर्टन बॉयज़ को इम्यूनिटी हासिल होती है कि वो सर्टन एक्ट्स कर सकते हैं और गर्ल्स इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। इसकी एग्जांपल हमें ऐसे मिलती है जैसे कि विक्टिम ब्लेमिंग मोस्टली होती है पाकिस्तान में। जब मुख्तारा मई का केस, रेप केस आया था, तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने ये कमेंट्स पास किए थे कि इस मुल्क में लोग अब्रॉड सेटल होने के लिए रेप भी करवा लेते हैं। देन रिसेंटली हमें मोटरवे इंसिडेंट में जो CCPO थे लाहौर के, उमर शेख, उनके रिमार्क्स मिलते हैं। देन मैंने एक रिपोर्ट को मेंशन किया है, इसमें उन्होंने बात की है कि 93% ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान एक्सपीरियंस करती हैं सेक्सुअल वायलेंस इन पब्लिक प्लेसेस अपने लाइफ टाइम में। देन मेरा 6 हेडिंग है कि किस तरह बॉयज़ को प्रिविलेजेस हासिल हैं नेशनल लेवल पर। मेरा 6A पॉइंट है कि सोसाइटी कंसीडर करती है कि पॉलिटिक्स जो है वो वुमेन का कप ऑफ टी नहीं है। वुमेन पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्ट नहीं कर सकती और इसलिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कोटा सिस्टम देकर। और इसकी मैनिफेस्टेशन इस तरह है कि जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं उनमें वुमेन को कोटा दिया जाता है। अगर जब तक हम वुमेन को इक्वल ग्राउंड नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो एम्पावर नहीं हो सकेंगी।
देन मेरा 6B पॉइंट है कि अगर टॉप अथॉरिटी को चूज करना हो एक हाई टियर जॉब के लिए बिटवीन अ बॉय और गर्ल, तो वो प्रेफर किया जाता है कि उस पर हमेशा मेल कैंडिडेट ही आए। जैसा कि ड्यूरिंग 90s IGI ने कंपेन की थी बीबी के अगेंस्ट के वो प्राइम मिनिस्टर एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, प्राइम मिनिस्टर का रोल सिर्फ मेल्स के लिए है। देन मेरा 6C पॉइंट है कि वुमेन को हम एज अ मिनॉरिटी ट्रीट करते हैं। डिफरेंट जॉब्स कैडर में हम कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे दूसरी मिनॉरिटीज के लिए करते हैं। तो देन मैं अपनी डिस्कशन को एक कोट के साथ खत्म करना चाहूंगा कि यू कैन गेट द मैन आउट ऑफ स्टोन एज बट नॉट स्टोन एज आउट ऑफ मैन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी अली रजा, थैंक यू वेरी मच। आपकी बहुत गहरी रिसर्च इस आउटलाइन से नजर आ रही है। ये मुझे एक बहुत बैलेंस्ड एस्से के तौर पे भी नजर आ रही है आउटलाइन। बड़ा खूबसूरत कोट है जिसपे आपने खत्म किया है अभिजीत नास्कर का कि यू कैन गेट द मैन आउट ऑफ स्टोन एज बट नॉट स्टोन एज आउट ऑफ मैन, जहाँ पे ये जेंडर रोल्स डिफाइन हुए थे बेसिकली शुरू से, मैन एज अ हंटर और वुमेन एज अ होम मेकर, और उसके बाद से सारी जो है उसी की हमें मैनिफेस्टेशंस जो है वो नजर आती हैं और डिफरेंट उसकी पार्ट्स में उसको किस तरह से रेमिफिकेशन नजर आती है। you have it's a very balanced sort of an outline I would say, और किसी भी एक साइड को बहुत ज्यादा जो है वो आपने उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी। और वेल बैलेंस मैंने इसलिए कहा कि इसके अंदर जो एक बड़ी कोहेरेंट अंदाज में मूव आपने किया उसके किस तरह से फिजिकल बायोलॉजिकल से उसकी सोशल और पॉलिटिकल और हिस्टोरिकली उसको जो है वो मूव किया है आपने सारे को। सो दैट्स good outline. Thank you, Ali, once again. So these were some of the outlines or some of the research that these people have presented in the form of outline. आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसमें से बहुत से पॉइंट्स जो हैं उसके साथ डिसएग्री कर रहे होंगे, या बहुत से लोग जो है समझ लो भाई इसमें फलां चीज का तो जिक्र ही नहीं किया, फलां चीज का तो जिक्र नहीं किया। We do not claim that it is an all comprehensive discussion. हमेशा ऐसे डिस्कशन फोरम में मैं हमेशा कहता हूं कि here we do not answer all the questions. हम बहुत सी चीजें आपकी सोच के लिए छोड़ देते हैं ताकि आप भी कंट्रीब्यूट करें, ताकि आप भी जो है मेरे हमेशा जो YouTube के ऊपर जो वीडियो आएगा उसके कमेंट्स ओपन है और आप उसके अंदर डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं शुरू, उसके अंदर अपने पॉइंट्स जो है वो दे सकते हैं। सो आपको भी एक्सप्रेशन का मौका मिलेगा। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सप्रेस करें तो सही अपने आप को, सिर्फ पैसिव लिसनर्स की तरह से बैठे ना रहें। इसलिए कि आफ्टर ऑल अगर हम ऐसे डिस्कशन फोरम की बात कर रहे हैं तो ऐसे बेसिकली राइटिंग है, राइटिंग एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन चाहे स्पोकन हो चाहे रिटन हो, बहरहाल माइंड की एक कम्युनिकेशन के लिहाज से एक आउटपुट का मोड है। सो लर्न द आउटपुट, कम इन द आउटपुट मोड। बार बार आपको मैं इस चीज के ऊपर जो है वो फोर्स करने की जो है वो कोशिश करता हूँ। Thank you very much all the people who came this Sunday morning and all the viewers also. Thank you very much.